A very good morning, good afternoon, and good evening to all. So, this is Subhendu Das, your physics mentor. Welcome to my YouTube channel, and this is the second lecture for thermodynamics. So, in today's class, we will discuss about thermodynamic processes. So, let's start the topic. Okay, so in previous class, we have already completed up to 0th law of thermodynamics. Yes, so our first part is thermodynamic process. So when a thermodynamic system goes from one state to another state, you remember thermodynamic variable starts to change. Okay, thermodynamic variables means I am studied previous class re pressure, temperature, volume, etc. So this is called thermodynamic system undergoes thermodynamic processes. So what you have to write? So in intro part we have to write when thermodynamic system goes from one state to another state, then thermodynamics variable changes. Okay, that means we will observe change in pressure, your change in volume, change in temperature, etc. Okay, so let's start. So first process is our isothermal process. आज क्लासटा भी बहुत इजी लगे. Isothermal process. Isothermal process means the process or thermodynamic process, the process in which pressure and volume varies at constant temperature. The isothermal process means temperature equal to constant. एगुड़ा सब केमिस्ट्री भी आम पढ़ी सारी already पढ़ी सारे. The process in which pressure and volume varies at constant temperature. Okay, so we know equation of state is what? We know the equation of state is, देखो केमती इक्वेशन बाहर बेटा. We know PV is equal to nRT. Yes, where n is our number of moles. Previous class discussion है. So जो मुझे पचारि तुमको ये कौन कहली आमर isothermal process constant temperature. So temperature constant. अच्छा, R is your gas constant, that is a constant, and n is number of moles, that is also constant. So constant into constant into constant. So constant रो multiplication भी कौन होगा constant. So our equation is PV is equals to constant as temperature is constant in isothermal process. Isothermal process number temperature constant है ना. So PV is equal to constant. Thus, so this is called our equation to Boyle's law. This is your equation to Boyle's law. Okay, finished. So next, you think about the example that is related to isothermal process. बहुत simple example आमर कौन? Melting of ice. Yes, melting of ice. That means
or we can write, yes, melting of rice, sorry, melting of ice, that is ice melts at 0 degree Celsius. Yes, at atmospheric pressure we can mention at atmospheric pressure ice melts at 0 degree Celsius. Yes, and in this case temperature is constant, and temperature remains constant throughout the process. Temperature remains constant throughout the process. Okay, I hope it is clear to all of you. Other examples are also there. You may think about another example, water evaporating into steam. Water evaporating into steam, that is also isothermal. Or you may think expansion and compression of ideal gas. Expansion and compression of an ideal gas. ओके आ गोटे भल एग्जांपल अच्छी देख मेकिंग पॉपकॉर्न, that is also isothermal process. Yes, so in all these processes temperature is constant. So first thermodynamic process I am पढ़ले isothermal process. Next come to our second process, that is our isobaric process. Bar means you remember pressure. Okay, so in isobaric process कौन हम प्रेशर constant रहिबो. So आम एटी मेंशन करिबा the process in which volume and temperature varies at constant pressure. Okay, so आम जानी कौन PV is equals to nRT. देख भलसे मुझे तुमको मेंशन कली प्रेशर कांस्टेंट रहिबो. सो प्रेशर कांस्टेंट रहिला एठी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट एंड आर इज कांस्टेंट. सो मैं एठी लिखि परबा कोन, यू कैन राइट V/T इज इक्वल्स टू nR/P. ए सब तो क्वांटिटी कौन रहिला हमर कांस्टेंट रहिला. सो हमें कहि परबा V/T is equal to constant. Simply we can write V/T is equals to constant. Okay, this is the equation for isobaric process, or you may say equation to, or this is equivalent to Charles law. Okay, V/T is constant. So for example आम देखा isobaric process रे when we boil water in a open vessel, when we boil water in an open vessel, pressure constant रही ना टी open vessel, so it is exposed to, its mouth is exposed to atmosphere. Pressure constant, that is atmospheric pressure. When we boil water in an open vessel, pressure is constant. Pressure is equal to constant, and that constant pressure is your atmospheric pressure. Okay, what is the value of atmospheric pressure? One atmospheric pressure ATM is equal to 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal. For numerical purpose, we can say 1 ATM is nearly equal to 10 to the power 5 Pascal. PA means Pascal. Okay. So this is all about our isobaric process. Next come to your third process, that is your isochoric process. Isochoric रे constant के
वॉल्यूम कांस्टेंट यस सो मैं लिखिबा एटी कोन द प्रोसेस इन व्हिच pressure and temperature varies at constant volume okay that is your isochoric process so equation कौन हम को PV is equals to nRT और ये वॉल्यूम कांस्टेंट अछि ना सो हम कौन करिवि P by T is equals to nR by V. Now see number of moles constant quantity, gas constant quantity, volume in this process constant. So whole जिनस आसिला कि सो RHS रे जहाँ सब लिखा है सब constant. So P by T is equals to constant. Okay. So it is our isochoric process equation. So which is equivalent to Gay-Lussac's law. This is equivalent to Gay-Lussac's law. Okay. अच्छा यार एग्जांपल पुनी कोन हबो आइसोकोरिक प्रोसेस एग्जांपल सो हमें लिख परिबा प्रेशर कुकर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम केंति कांस्टेंट रहउची एंड प्रेशर आ टेंपरेचर केंति वेरी करची जस्ट सी प्रेशर कुकर a simple example in pressure cooker you remember up to there is no whistle जेपर द प्रेशर सिटी स्टार्ट करनी ओके अप टू देयर इज नो व्हिसल सो इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कौन रहला कांस्टेंट जहाँ भी फूड मटेरियल पड़ी एपर्यंत सिटी बाजिनी आम कहीपर वॉल्यूम कांस्टेंट अच्छी ओके बट ता भीतर कौन हो वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर ओके बट वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर so that temperature increases या सब प्रेशर कुकर इनसाइड कथा कहला so that temperature increases अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज हेले फायदा पुणी कौन हम so when on increasing the pressure inside the pressure cooker temperature increases so as a result of this we can write as a result of this boiling point of water increases okay so boiling point of water के तमे जानि 100 degree celsius so it लिख परिबा boiling point of water increases from 100 degree celsius to 120 degree celsius okay so due to this reason लिखिबा for this our cooking becomes faster ହେଲା फास्टर सिलेबस टिके भास्ट रहइबो तापर आम जानिले कौन किसी पिला मैथमेटिक्स कंपलसरी पेपर रखुचंती किसी पिला रखु नांदी सो किसी ना किसी कौन एमती अप डाउन टिके रहइबो फिजिक्स रे तमरो सो ताकू डरिबार नाही सो मु भी पढ़ला बेले सेमती रहउतला तुम भी पढ़ला बेले हबो नेक्स्ट जे आसीबो से माने भी सेही प्रॉब्लम फेस करिवे स्टिल वी हैव टू फाइट एंड तुम सदाले अटेंशन आ अटेंशन रहा दरकार कौन मुझे पढ़ुची टिके जहाँ भी टिके बुझी इंटेंशन कौन रहा दरकार नाई मुझे करें एनी हाउ आमको ओवरकम करार अच्छे प्रोब्लेम टाक तामान नुह जो इंटीग्रेशन तो आम सेकेंड ईयर पढ़ा ये शिखानी डेरिवेटिव तो अच्छी से शिखानी अच्छा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से गुड़ाक जमी अच्छी आम इनक्लूड हो मैथमेटिक्स पार्ट आहरी आम अच्छी ग्राफ अंडर आम स्लोप ये सब मोशन इन वन डायमेंशन सब प्रिलिमिनारी कॉन्सेप्ट सब पढ़ा हम सो फास्ट बुक आम जो रहा फास्ट पार्ट ओके अप टू रोटेशनल मोशन सब तक इम्पोर्टाट से सब क्लासिकल मेकानिक्स अंडर रे जीवो ओके सेकेंड पार्ट रे हमरो मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एमपीएस मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एमपीएफ देन टीपीएम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर
देन आमर आसो थर्मोडायनामिक्स केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑसिलेशन ऑफ वेव से जो मैथमेटिक्स पाइबो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो बारंबार सो सबुत आमर मैथमेटिक्स दरकार निहाती ओके विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स केमती कंटिन्यू केमती कर पारिबो गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया को हेले मैथमेटिक्स दरकार ओके आ फिजिक्स तो प्रॉब्लम तो आसीबो प्रॉब्लम इन द सेंस कौन कहल मु न्यूमेरिकल कथा कहूनी फिजिक्स मीन्स एटा नेचर रो कॉपी पेस्ट कांसेप्ट सो नेचर को बुझिया को माने मैथमेटिक्स दरकार बिकॉज भगवान भी तैयारी कर नेचर टाक बाय यूजिंग द हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स ओके सो एबे तुम एज तुम यहाँ जापर आपको अधिक स्टडी कले जान निहाती ओके सो आम पाठ को आसवा 3टा प्रोसेस आम कंप्लीट कर पारे जेहेतु फिजिकल क्लास नुह तुम ऑनलाइन तुम देखुच यहाँ तो टिके अटेंशन देकी देख पेशेंस रखा दरकार 2x स्पीड देख 1.5x देख जो स्लो लगुच ओके नॉर्मल स्पीडटा बिकॉज मत एक्सप्लेन कर तो लिखापी टाइम नौ ना सो आफ्टर दिस process next 4th is our adiabatic process ये adiabatic process में बहुत किसी जिनसे शिखिबे हला देखो so adiabatic process means you remember no heat is supplied to the system or no heat is removed from the system okay ये टाइप रो सब प्रोसेस टा हम कहबा adiabatic दैट मींस चेंज किया हो ताले हीट चेंज के देला ताले हियर चेंज इन हीट रिमेन्स कांस्टेंट thus चेंज इन हीट remains constant but change किए हेले pressure volume temperature changes pressure volume temperature ये सब thermodynamic variables रा चेंज हेबे ओके फिनिश्ड अच्छा देखिबा यार इक्वेशन कोन हबो सो फॉर दिस process equation of state is you remember p v to the power gamma is equals to constant पुणी तुम मानकर डाउट बर्तमान ये गोटे नुआ क्वांटिटी आसला गामा कौन गामार स्पेलिंग कौन रे GAMMA okay Greek letter so all of you remember what is gamma in this case so gamma is equals to you remember it is the ratio of Cp and Cv Cp by Cv is called your gamma again point out asला Cp कौन Cv कौन थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर पढ़ी आ जदि भी तुम फास्ट टाइम ये लेक्चर टाक देखुच विदाउट फिनिशिंग योर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देन मुझे हिंट्स दे दूँ व्हाट इज Cp so you remember Cp means molar specific heat at constant pressure okay and Cv means molar specific heat at constant volume okay पुणी तुम कह स्पेसिफिक हीट कौन नेक्स्ट आउ गोटे डाउट आसला मोलार स्पेसिफिक हीट कौन हम पुणी बुझला नहीं एगुड़ा देख टे हिंट्स दे दूसरी सुविधा हे तुमको टे रिकल करने कॉन्सेप्ट फास्ट इज आवर स्पेसिफिक हीट जानिच परहैप्स सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius okay this is your specific heat और फॉर्मूला कौन यार फॉर्मूला Q is equals to mc delta T okay so that means C is equals to Q by m del T
ବାସ୍ ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଏରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ତୁମର ନିହାତି amount Q କ'ଣ amount of heat supplied, mass of the substance ହେଲା M, change in temperature, rise in temperature is del T. So ପଢ଼ା ହେଇନି ଏମିତି Q proportional to M, Q proportional to change in temperature obviously so Q proportional ଆମେ କ'ଣ କହିବା M del T, so Q equals to MC del T or AC ଜାଗାରେ S ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, that is your proportionality constant called specific heat. So this is your specific heat. Next is our what is our molar specific heat ना कि जो लिखा हो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस से मास ऑफ सब्सटेंस जो 1 मोल सेटा हो मोलार स्पेसिफिक हीट. सो इन मोलार स्पेसिफिक हीट व्हाट वी हैव टू राइट मोलार स्पेसिफिक हीट. व्हाट इज दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius at constant volume. at constant volume हो परिबो और at constant pressure भी हो परिबो. बुझिला ना नहीं. सो मोलार स्पेसिफिक हीट है टू टाइप्स. मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जोटा आम आसला एटा को कह सीवी एंड मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एटा को आम कहबा सीपी. मन रहला. यस एतिकी तो कथा एथरे. सो ऑलवेज यू रिमेंबर सीपी इज ग्रेटर दैन सीवी. सीपी इज ग्रेटर दैन सीवी. आपको पढ़ा आम व्यस्त ना है मु क्लीयर कर जी टे जिनस जदि छोट छोट डाउट आसुची किसी तापर ओरिड हबार ना तुम प्रोसीड कर चल. ओके सो देख भल जिनसटे मुझे कहूँ सीपी आ सीवी केमती ग्रेटर है छोट एग्जाम्पल ये बताऊँ. देखिए इन केस ऑफ सीवी कौन हुए देख इन केस ऑफ सीवी सपोज बेटी मुझे गोटे डायग्राम करी ओके करुँच देख ये आमर है पिस्टन बस ये आम कौन दबा सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कली अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज क्यू एंड मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखिली बस. सो दिस इज आवर मूवेबल पिस्टन. मूवेबल पिस्टन एंड एटा मुझे कौन भीतर नहीं भीतर आमर अच्छी आइडियल गैस फिल्ड इन ए सिलिंडर. आइडियल गैस फिल्ड इन ए सिलिंडर ये तो ऑब्जर्व कर ना. सो इन केस ऑफ सीवी जो मुझे लिखिली कौन हम देख सो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा ये. ओके सो कीपिंग डायग्राम देख भलसे बुझीपर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट आम कौन करवा इफ वी सप्लाई हीट ताल कौन चेंज आसो देन टेम्परेचर इंक्रीजेस. इफ यू सप्लाई हीट देन टेम्परेचर इंक्रीजेस. अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज हेल्ले हम कौन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स से गुड़ा भी इंक्रीज हम आमर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. बस एज ए रिजल्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. ओके सो हम पढ़ा इंटरनल एनर्जी लास्ट पढ़ेबी
इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस सेम कॉन्सेप्ट मुझे तुम बताया जाऊँगी सपोज देखिए आम इन केस ऑफ सीपी कौन हो इन केस ऑफ सीपी मीन्स व्हाट मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये आम प्रेशर कांस्टेंट रखा जस्ट सी ये मुझे रखिली कौन प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट से मुवेबल पिस्टन रहा ओके आ मुझे सप्लाई कली कौन क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड सो ये भल जिन देख कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट आम कौन करवा इफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इंक्रीजेस देन कौन आसो टेम्परेचर इंक्रीज हो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सो ये आउ गोटे एक्सट्रा जिन वॉल्यूम ऑल्सो चेंज हो वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस ओके सो कौन देखिले आम लिखा टे कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट if amount of heat supplied increases then you will observe same जिनसे आम लिखा टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रीवियस भी लिखी सीवी केस रे टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड नेक्स्ट इज व्हिच इम्प्लाइज इंटरनल एनर्जी कौन हम इंक्रीज हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस आउ कौन हम एंड ये सहित कौन हम वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस जोटा कि ये प्रीवियस केस रे कौन थिला वॉल्यूम कांस्टेंट थिला एंड वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस ओके सो ये कौन देखिल सिंस वॉल्यूम चेंजेस ये आम गोटे भल जिन देखिए सिंस वॉल्यूम चेंजेस सम एक्सटर्नल वर्क इज डन वॉल्यूम चेंज है कौन हम पिस्टन मूव कला ना सो पिस्टन उपर किसी गोटे फोर्स अप्लाई होती डिस्प्लेसमेंट है सो आम कहीपर सम कौन हम एक्सटर्नल वर्क इज डन सो सिंस यू कैन राइट सिंस वॉल्यूम चेंजेस सो सम एक्सटर्नल वर्क इज डन ओके बस दुईटा कॉन्सेप्ट छोट छोट कॉन्सेप्ट बताइली इन केस ऑफ सीवी गोटे इन केस ऑफ सीपी सो बहुत केस रे आम कौन फास्ट केस ने इन केस ऑफ सीवी वॉल्यूम कांस्टेंट सो टेम्परेचर इंक्रीज है सप्लाई ऑफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इंक्रीज कले टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस सेम थिंग ये आउ गोटे एक्सट्रा है कौन वॉल्यूम चेंजेस है कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट ओके सो बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम सम एक्सटर्नल वर्क इज डन सो वी कैन से 10 आम कौन जान सीपी इज ग्रेटर दैन सीवी है एडिशनल एक्सट्रा जिनस आम पाइले ना बस सो आम देखिए कौन एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस सब इंपोर्टेंट जिनस मन रख नो चेंज इन हीट ओके चेंज इन हीट इज कांस्टेंट सो एग्जांपल्स वी कैन राइट व्हेन साउंड प्रोपागेट्स इन ए मीडियम आम पढ़ा ऑसिलेशन चैप्टर सरला वेव पढ़ा हम तुम देखिए ये पढ़ा हम कौन न्यूटन्स फॉर्मूला लाप्लास करेक्शन सो लाप्लास करेक्शन ये तुम शिख साउंड वेवटा कौन एक्चुअली साउंड वेव जे लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो मीडियम रे ट्रैवल करिवो से कंप्रेशन और रारिफैक्शन फॉर्मेट रे ट्रैवल करिवो ओके क्लास 9 रे पढ़ाई से गुड़ाक ओके जदि भूली जाइछ वेट करो वेब चैप्टर रे भल से पढ़िबो बट एग्जांपल पे हम तो लिखिबा एठी सो अकॉर्डिंग टू लाप्लास कोन कहिथिले व्हेन साउंड प्रोपागेट्स इन ए मीडियम ड्यू टू कंप्रेशन और रारिफैक्शन प्रेशर कोन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस बट एते स्पीड रे साउंड ट्रैवल करे जे से सराउंडिंग सहित किसी गोटे हीट एक्सचेंज करने समय न था ओके बहुत कम टाइम था सो आम कहीपर ये व्हेन साउंड वेव propagates in a medium due to compression and rarefaction pressure and volume changes okay but change in heat केते हो constant ए केस रे कोन आसीबो but change in heat is constant हम जानि छी ना ए प्रोसेस रे change in heat ता कोन constant change in heat is constant आ गोटे भल एग्जांपल दोची मजा लागो दैट इज योर रैपिडली पंपिंग ऑफ एयर इनटू ए बाइसाइकिल टायर एटा भी हमर कोन हो
that is also adiabatic process, remember. ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, rapidly pumping of air into a bicycle tire. This is also a adiabatic process. Okay, and the next is fourth process finished, isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic finished. Next is fifth, that is your reversible process. এটা তো easy, reversible process. Yes, कौन लिखिए तार मीनिंग, a system, in this case a system means thermodynamic system. A system reaches its initial state after undergoing a series of intermediate stages. Just exactly in the forward direction. कहबार अर्थ कौन है, सपोज एट ए टू सिस्टम चेंज है कौटी बी, देन बी टू चेंज होगा से सी को, जमी फरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करथिला से बैकवर्ड रे कौन तार इनिशियल स्टेट गसे सी टू बी देन बी टू ए रिटर्न आसीबो. So for example we can say compression and extension of what, elastic spring, compression and extension in elastic spring. Okay, this can be treated as reversible process. Yes, and it गोटे छोट पॉइंट मु तुमको कहूची, you remember reversible processes are very slow, से कौन कह जाए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कह जाए. Reversible processes are very slow, which implies it is called quasi static process. I hope understand, तुम कौन कर, आई होप हैंड राइटिंग तुम बुझी माने देखा जाऊँ ठीक से, तुमको क्लियरली जानी पार्थो, आइडेंटिफाई कर पार्थो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. So next is irreversible process. This is your fifth, then come to sixth. एतिक सरला है, व्यस्त ना. Irreversible process, गोटे क्लास टाइमिंग के 40 to 45 मिनिट्स, तो ये तुम पेसेंस रहा निहाती दरकार आज ए 11th क्लास स्टूडेंट. सो पेसेंस रखा जब पढ़ा केमती. सो सिस्टम कैन नॉट, ये कौन हम, सिस्टम कैन नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ओके, फॉर एग्जांपल आम देखा गोटे पेपरटा चिरी दिए तो, दैट इज इरिवर्सिबल. ओके, टीयर ए पेपर ये पाइबा. यस, सो गोटे भल क्वेश्चन तुमको दिखाऊँगी देख. सो दैट क्वेश्चन इज, क्वेश्चनटा कलापर आम पढ़ा इंटरनल एनर्जी विषय. ओके, तापर क्लास को एंड अप करवा. सो आवर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ specific heat capacity when a thermodynamic system undergoes, first is your isothermal process,
second is adiabatic process. सब नोट कर जहाँ जहाँ पढ़ेली एबे पेपर टर्न कर पछू देख देखिए फास्ट 2 मिनिट्स तुम्हें भाविकी देख आंसर सॉल्व कर ट्राई कर तापर वीडियो ऑन करके तुम देखियो. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आम जानी कौन डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी. सो सी वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाय एम डेल टी. ओके. सो जदि मुझे कह दुईटा क्वेश्चन देना मत आडियाबेटिक और आइसोथर्माल. सो फास्ट मुझे करी फॉर आइसोथर्माल प्रोसेस. देख फॉर आइसोथर्माल प्रोसेस आइसोथर्माल प्रोसेस रे तुम टी कौन कन्स्टांट अरे टेम्परेचर कन्स्टांट माने इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर ताने चेंज इन टेम्परेचर केते हो डेल टी इक्वल टू 0. सो सी वैल्यू केते सी रो फॉर्मूला डेल क्यू देखो ऊपर लिखा है स्क्रीन देखो डेल क्यू बाय एम डेल टी तो वैल्यू 0. So something by 0 get infinite. This is your answer. Finished. So next is for adiabatic process. In case of adiabatic process जहाँ condition देती तुम बाहर करा देखो कते बाहर डेल्टा क्यू के चेंज इन हीट इक्वल टू अरे हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बस. सो डेल क्यू इक्वल टू 0 चेंज इन हीट 0 बस यूनिट कांस्टेंट. सो मुझे कौन कहली सी इज इक्वल टू फॉर्मूला डेल क्यू जगह 0 लिखा बाय एम डेल टी. So 0 by something is 0. This is the answer. Finished. Okay. I hope it is clear to all of you. Next is our internal energy. So last topic of our class, internal energy. Okay. तो सब तो लेक्चर देख सार प्रॉपर्ली नोट करो ताको रिवाइज करो. देख तुम्हें चैप्टर 80% एवं भल से क्लीयर हो पार. ओके. सो एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम विदिन इट सेल्फ इट इज द एनर्जी यू कैन राइट इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम विदिन इट सेल्फ. ओके. अरे इंटरनल एनर्जी मीनिंग कौन काइनेटिक या पोटेंशियल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ये दुटा एडिशन हम टोटल इंटरनल एनर्जी. सो वी कैन राइट टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. कौन कहली मु काइनेटिक एनर्जी कौन ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन. ओके. The kinetic energy due to molecular motion. Our potential energy it is due to molecular configuration. Clear? ये तो सब लिख लिया कौन kinetic energy due to random motion of molecules and potential energy due to intermolecular force of attraction. Okay, clear? And you remember this kinetic and potential energy is only for real gas. ये लाइन टा कौन मीनिंग कल देख दैट मीन्स मुझे कहवा चाहूँ इन केस ऑफ आइडियल गैस यू रिमेंबर दिस इन केस ऑफ एन आइडियल गैस ओनली काइनेटिक एनर्जी contributes towards internal energy. Okay. In case of ideal gas only kinetic energy contributes towards internal energy. तुम को potential energy रो काम कौन ताले किसी आसलेनी कौन भाई. So here no potential energy exists because reason कौन को reason is
because of random motion. Because of random motion. Bas. Okay, so this is all about our internal energy. So maximum आम concept clear हो गले. So different thermodynamic processes starting from your what isothermal process. Second is our isobaric process. Next is isochoric process, adiabatic process. Okay, then reversible irreversible process. Okay, so this is all about for today's class. So stay tuned for next update. Thank you. Have a nice day.